I thank God for this wonderful day once again that He has given, and this opportunity that we could all look into the presence of the Lord. And I thank God for leading us through in this form. आज तक परमेश्वर ने हमें चलाया है, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूँ. As I'm starting through, I want to thank. I've been praying for your church, been praying, and I was telling Nissi the other day, I'm like, I heard a lot about your church from Pastor Jomon. मैंने बहुत कुछ सुना और मुझे बड़ी खुशी हुई आपके बारे में सुन के. And I was saying that I'm jealous for your church with a godly jealousy. क्योंकि I also desire. I'm like, this should be the kind of a church that every other churches should be in this form, where we stay together as a family and we work together and with the same motive, so the same understanding. And I hope and I believe, as I pray, I don't see everybody here. Most of your videos are off. Sometimes I'm like, one or the other people come and I do see them. I remember you as your faces, and I do pray. I don't know why most of you don't switch on the videos. I don't know if the pastor has told it that way, but yeah, I hope all of you are listening, and if you have network connections, please don't switch on. But yeah, thank God for what God has been doing in each of our lives, right? परमेश्वर हमारे जिंदगियों में क्या करते हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उसके लिए मैं परमेश्वर की धन्यवाद कहता हूँ. Sometimes it's good when some videos are on, wherein I feel that I'm speaking to someone and not just to myself. Right? Praise God for that. Yeah, don't bother. Don't please pressurize to switch on the videos and all. I'm not asking you to do that. Yeah, but praise be unto God. Praise be unto God for what we are doing. Especially as we've been praying. जब हम प्रार्थना कर रहे थे, एक दो चीज जो हमें छुई है, मतलब the things that I've been touching is that true intercession has been happening. ना, हम जब intercessory prayer कर रहे हैं, one thing that we see for sure is that the Spirit of the Lord has to be working there. We are all that we could do is just to pray. हम बीच में stand in the gap, and all that we can do is to pray. But all that God does is what matters, right? It has to be the Lord who does the rest of it. हम उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, है ना? हम उससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते हैं. परमेश्वर को खुद करना पड़ेगा, है ना? हम बस इतना कर सकते हैं, जैसे मूसा जब हम देखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आने वाला था, इजराइल जनों के ऊपर, उस समय मूसा खड़ा होता है और प्रार्थना करता है. He stands in between and he starts to pray for the children of Israel, right? And that's what intercessory prayer does. That's what we got to do for our neighbors. That's what we got to do for our nation as such, right? Wherein we pray, right? Our prayers would not forgive. Probably, see, it is not a time wherein the sins are forgiven. I like the way Pastor Saju John, and if you know him, he's a pastor from Kerala, and I like the way he puts it across. गलती हमने किया होगा, हम जब शायद हो सकता है कि मैंने गलती किया और आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, है ना? या there are people who are outside and they have done wrong, they have been in sin, right? Probably there would be punishment. There might not be. There are good chances there will be punishment that will come through for them. But when we pray for them, when we pray for those people who are doing it ignorantly, अनजाने से जब करते हैं ना, it's more like this point wherein, like, I like the example that he gives. It's more like when there are little children, the छोटे बच्चे होते हैं, है ना? वो सॉकेट के अंदर जब हाथ डालते हैं, when they put their hands into the sockets, we as parents know, we try to make sure that they don't put their hands. But if they put their hands, if the child is putting ignorantly without knowing, right? The child puts the hand, even if it's without knowing or if it's with knowledge, right? If you put your hand inside the socket and if the switch is on, you would have a shock, right? There will be the repercussions that will take place, है ना? वो हाथ सॉकेट के अंदर डालने की वजह से करंट तो जरूर मारेगा, है ना? जाने या अनजाने से करें, करंट जरूर मारेगा, right? But when we as children of God, when we are interceding and praying, we are asking for God to show mercy, right? And God, we are calling for God, and we are buying this whole point when we tell God, Lord,
show them this mercy. परमेश्वर उनको भी दया दिखाओ, जिस प्रकार से आपने हमें वो प्रेम दिखाया है वो भी देख नहीं पाए. We are standing in between and asking God, and we serve a gracious God who loves, who loves and who has actually asked us to be there, interceding for the nations and crying and weeping for the nations, right? And praise be unto God for a church that is doing this, right? And we have been doing this study. हम जो ये study कर रहे थे, we have been doing the study from the fruit of the spirit, right? आत्मा के फल के बारे में हम देख रहे थे, right? And yesterday we looked into the fruit of love, right? And as I mentioned yesterday, you know, this is not something that we choose to do once and we choose not to do the other time, है ना? हम जब चाहे करें ना करें ऐसा नहीं है. This is all a package, right? This whole thing works together. The fruit of love, joy, peace together. Everything works together. All the 9 fruit. There is much more than this, but yeah, at least 9 is what is mentioned here. All of that work together. You cannot choose to do one and not to do the other, है ना? हम एक चुन के दूसरा ना चुने ऐसे नहीं कर सकते, है ना? हम जब परमेश्वर के सन्निधान में और परमेश्वर से मांग रहे हैं, परमेश्वर हमें इन सब को ये जो फल है, आत्मा की फल जो है हमारे अंदर देने के लिए परमेश्वर सक्षम है, right? And today, without taking much time of introduction, right, I want to move into the fruit. Today I'm taking 2 of those together, right? In the fruit of the spirit, 2 of those mentions, like joy and peace. मैं एक साथ लेना चाहता हूँ. आनंद और समाधान, शांति, ये दोनों मैं एक साथ लेना चाहता हूँ. The reason why I want to take together is because you know, it is more or less interlinked, right? आपके पास अगर खुशी है तो शांति भी रहने का चांस, अगर शांति चले गया तो खुशी भी चले जाता है ना? There are good chances when the joy goes, even peace would leave, right? And when peace comes, joy also comes, right? So that's the reason I just wanted to take it together. When I was kind of preparing, I wanted to do it separately, but I kind of realized that I would be talking pretty much the same thing on both the days. So I want to take this together, and there is much more that I want to bring about on the coming future days, right? And God willing, I want to bring in, and I'm asking God that God may speak to me and through me to do His will, right? And today we are going to see through about the fruit of the Spirit with regard to joy and peace, आनंद और शांति, है ना? इसको हम देखते हैं, है ना? The word joy in Greek basically means khara. It doesn't mean khara. The word is khara, right? And peace basically means eren, right? Joy is something that fills in, right? It fills in. हमारे अंदर भर देने के बाद वो हमारे अंदर से बाहर निकलता है ना? जब एक व्यक्ति खुश है, it is probably, there is a good amount of chances, mostly, unless you are a person who doesn't want to show any feelings at all, right? There are good chances when joy fills in our heart, it is pouring out, है ना? वो बाहर की तरफ आएगा. शांति जब हमारे अंदर आते हैं, when there is peace within us, that also pours out, right? When I said it is interlinked, it is pretty much has the same characteristics, right? Pretty much has the same characteristics. So when I'm talking about joy, I'm also including peace within that. When I'm talking about peace, I'm also mentioning joy within that also, right? So it is quite interlinked, right? And when we talk about this joy and peace, खास तौर पे जब हम शांति के बारे में बात करते हैं, है ना? शांति के बारे में जब देखते हैं, I was trying to go through this whole statistics, and in the world around, you know, the most amount of money that is being spent is on maintaining peace, है ना? शांति बरकरार रखने के लिए सबसे ज्यादा हमारे वर्ल्ड के इकोनॉमी में सबसे ज्यादा पैसा, हर देश उसी के लिए सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है. I was seeing this, I don't want to give you much details on those lines, but when I was seeing that startled me, and the thing was told that in 2015 में जो है युद्ध हुआ था, and that was the maximum number of people that died in the last 25 साल के अंदर युद्ध की वजह से मरने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक कहां पे थे बताए? 2015 में, right? Because of war and terrorism, the most number of people died in 2015,
And for war, just to run the war, there was $13.6 trillion that was spent by the governments around the world. है ना, हम लोग भारत में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे 13.6 trillion utna, that much worth of weapons and ammunitions was used to conduct wars, लड़ाई चलाने के लिए ना, युद्ध के लिए उतना इस्तेमाल किया. And it says that it is 11 times more than that of the total foreign direct investment that the whole world runs, and the 11 times more. It's huge money, right, that has been spent. But is there peace? There is no peace, है ना. शांति है क्या? शांति नहीं है ना. पता नहीं अगर आपके चर्च में किसी का नाम शांति है, अच्छा नाम है, लेकिन I am not talking about the name Shanti, right? But I am talking about this whole aspect of peace, है ना. वो शांति के लिए जो दौड़ दुनिया में लगा हुआ है, वो खुशी के लिए जो दौड़ दुनिया में लगा हुआ है, वो हमेशा आके कैसे रुकता है बताइए. The way the people are trying to find peace is through security, है ना, is through having more securities around, and you think that you will have more peace of mind, है ना. आपके घर पे अगर बहुत for joy, what they try to do is to get into the world, है ना, दुनिया में जाएंगे और पैसा कमाएंगे, पैसा कमा रहे हैं और उस पे खुशी के लिए मूवी देखने जा रहे हैं, लोग जो है दारू पीने जा रहे हैं, वाइल्ड पार्टीज. We saw all those, right? We see all those lists in chapter 5 verse 19, है ना. गलातियों उसका 5:19 में हम देख सकते हैं, बहुत बड़ा लिस्ट है ना. शायद हम गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, लोग बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं. लगता है कि शांति मिल रहा है, लगता है कि आनंद मिल रहा है, और ये आनंद क्षण में निकल के जा रहा है ना. This is not a lasting joy, this is not a lasting peace that we have, right? And when we look into the scripture, I would want you to turn with me to John chapter 14. Right? There are many scriptures. I'm taking only few of those scriptures today. है ना, बहुत सारे हैं खुशी और शांति के बारे में कहने वाले, बहुत सारे नए नियम में ही बहुत सारे वचन हैं. मैं सबको नहीं लूंगा. I don't generally preach on topics, right? I don't preach on topics like love, joy, and peace. I generally take in a scripture passage to preach. This is probably the first time that I'm preaching like this. But praise be unto God, I could learn so much. मैं जब ये तैयारी कर रहा था, मैं बहुत कुछ सीखा, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूँ कि मैं ऐसे सीख पा रहा हूँ, और परमेश्वर की दास को मैं धन्यवाद कहता हूँ कि ऐसे एक समय दिया है. When we turn to John chapter 14, and when we read, can someone read from verse 27 and 28 for me? John chapter 14, यूहन्ना उसका 14 अध्याय, उसका 27 और 28. मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे. तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आऊंगा. यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है और मैंने. काफी है. हे स्वर्गीय परमपिता, धन्यवाद कहते हैं ये समय जो आपने दिया है परमेश्वर. हम परमेश्वर आपके इन वचनों को आपके हाथों में देते हैं और प्रार्थना करते हैं, आप हमसे बात कीजिएगा प्रभु, आप मुझसे बात कीजिएगा, मेरे द्वारा बात कीजिएगा परमेश्वर. मैं बस आपका एक मुंह बनना चाहता हूँ जहां से आप बात करें परमेश्वर. Lord, speak to me and speak through me so that we, oh Lord, can learn what your scripture wants to say, what you want to say to us, Lord, in these coming days as we are in fasting and in prayer. Oh Lord, we ask for your spirit to lead us. Thank you for doing so. In the name of Jesus we pray. Amen. Please stop me if I'm going quite too fast. And to cover up everything, I start to run very, very fast, right? And please raise your hand or do something wherein I get to know that I'm a little fast. When we read through the scripture passage very clearly talks, Jesus saying that peace I live with you, my peace I give to you. I don't give as the world gives. Don't let your hearts be troubled and do not be afraid.
है ना, मैं तुम्हें वो शांति देके जा रहा हूं, मैं मेरा शांति तुम्हें देके जा रहा हूं। यीशु मसीह अपने चेलों को देखिए ये वादा देता है, पवित्र आत्मा का वादा देता है। एंड वी सी दैट प्रॉमिस इन वर्स 15 ऑनवर्ड्स, किस प्रकार से वो पवित्र आत्मा का वादा देता है और कहता है कि, है ना, कि द वर्ल्ड इज नॉट लुकिंग फॉर दिस। ये किन लोगों के लिए? ये उन लोगों के लिए जो इसको ढूंढ रहे, है ना। यू विल फाइंड पीस ओनली इफ यू सर्च फॉर दैट पीस, right? And Jesus is here mentioning that I am giving my peace to you. मेरा शांति मैं तुम्हें देके जा रहा हूं, है ना। And there is no peace that is greater than that of what Jesus could ever give us, right? And Jesus comes and says that peace I live with you, my peace I give you, I don't give as the world gives. ये दुनिया जिस प्रकार की शांति देती है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी से हो सकता है, वो जो है तुम्हारा देश जो सुरक्षित है या फिर तुम्हारा घर जो सुरक्षित है, शायद तुमने सिक्योरिटी गार्ड्स लगाए होंगे, you would have put security guards and you would have much money to secure yourself and you would have thought that you would have peace of mind when you go to sleep. That's not the peace that Jesus is trying to intend. That's not the peace that Jesus is trying to say, right? Jesus is trying to say, I am giving you a peace that is different from that the world gives, right? And this is for those people who are looking forward to that, right? Here when we see, where is it? Right, Jesus says that, you know, I am giving to you the Holy Spirit, right? Where is it? Right, I'm just missing. I'm using like 2-3 Bibles to find that. Right, it says that I am giving you the Holy Spirit, and this is not like that the one the world gives, right? And the world will not know this. Dunya isko nahi jaan pa raha hai. The reason that the world is not knowing is because the world is not even seeking for it. But when you seek for the Holy Spirit, you will receive that Holy Spirit. And Jesus is saying that very clearly, right? And Jesus, when he's saying that, what Jesus meant is basically, you know, when we come to John chapter 6, and when we read from verse 35 onwards, you see this whole passage when Jesus talking about never hungry and never thirsty. You know, those who come to me will never go hungry, nor those who believe. Can someone read that? John chapter 6 verse 35 in Hindi. यूहन्ना 6 का 35 कोई पढ़ सकता है? John 6:35. या जॉन 6:35। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। वहां पे यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं होगा. You will never hunger, and those who believe in Jesus will never thirst. That is this hunger and thirst that Jesus is mentioning, and he's using this term called never. कभी भूखा नहीं होगा, कभी प्यासा नहीं होगा. मतलब क्या था? And this is a little I'm like tricky. I don't want to get into that. I have a series that I have made with regard to true disciples, and I'm like not just followers but true disciples. It's there in English and Hindi. उसमें मैंने इसको और डिटेल में गया था कि who is Jesus and why do we need Jesus, right? But when Jesus mentioning there about never hungry and never thirst, you'll never be hungry and never thirst. What Jesus is trying to say basically is that those who are in this thirst, I spoke about that sloka in the first day. Asutoma sadgamaya, tamasoma jyotirgamaya, mrityoma amritam gamaya. You know, this was the ये जो श्लोक था, ये प्रार्थना जो थी पिछले हजारों सालों से ऋषि मुनिया इन प्रार्थनाओं में चल रहे थे. They were praying this prayer, right? असत्य से हमें सत्य में लेके आओ, तमस अंधकार से हमें ज्योति में लेके आओ, मृत्यु की अवस्था है, from death bring us to eternal life. And when these rishis and munis were praying this prayer for thousands of years, the answer came with the form of Christ Jesus coming into this world 2000 years back. This answer was fulfilled. This question, this prayer was answered. है ना, ये प्रार्थना का उत्तर 2000 साल पहले आ गया था, है ना. और वहां पे हमें यीशु मसीह और वही भूख और प्यास के बारे में बता रहे हैं. यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम अगर भूखे हो, I'm like, if you are hungry for righteousness, if you are thirsty for righteousness, I am the solution for that, right? And I'm the full stop. You will never thirst and hunger.
And that's pretty much a similar kind of a joy and peace that God is giving to each and everyone who follows Him, right? It's not that you can't literally take it that way, like the never aspect of hunger and thirst, but this would be pretty much in that position wherein you will get to a point wherein no one person can ever snatch away the joy and peace that you have in Christ Jesus. Nobody can snatch it. And that's the one that Jesus gave all of us. That's the one Jesus gave us, right? No one can snatch it away. Now, when Jesus gave this promise that peace I given to you, and peace that I give is not that the world gives, but I give my peace unto you. क्या करोगे आप? ना लोग पूछते हैं यार क्या करूँगा इस शांति का क्या करूँगा चार डालूँगा ना people have asked that question, right? Why what is the use of this peace? है ना इस शांति का क्या फायदा है ना? हम हमेशा जब शांति या खुशी या आनंद इन सब को लेते हैं ना, हम इस दुनिया के रीति में लेते हैं ना. इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में मुझे शांति चाहिए, इस दुनिया में मुझे पैसा चाहिए, इस दुनिया में मुझे खुशी चाहिए, ये सब हम ढूंढ रहे हैं, है ना. जब हम परमेश्वर के सन्निधान में आते हैं, हमारे दिमाग में, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जेनरिक बता रहा हूँ, लोगों के दिमाग में बस इतना ही है कि भाई साहब मैं परमेश्वर के सन्निधान में हूँ, मुझे खुशी चाहिए, शांति चाहिए, समाधान चाहिए, बस खत्म कहानी, है ना. इसलिए लोग हमारे पास आ रहे हैं, लोग कलीसियाओं में आते हैं, है ना. ये शांति और समाधान दुनिया में आप श्री श्री रविशंकर के पास जाओ, वहां पे भी लोग जाके बोलते हैं भाई साहब क्या शांति था ना. People have spoken, like all those religious leaders also, even Christians who have gone there, they've come and told, है ना, क्या शांति है जो वहां पे मिलता है ना. एक खुशी अंदर से भर जाता है जब हम उस कैंपस के अंदर घुसते ही. there is a shanti. That's not the shanti that Jesus is giving, right? That's not the shanti that Jesus was talking about, है ना. यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह जो शांति कह रहे हैं, ये शांति से क्या फायदा है, ये क्यों, किस बात की शांति की बात कर रहे हैं? What is this peace that Jesus is talking? You know, when Jesus is talking about this peace, you have to go a little back to understand what is this peace that Jesus was trying to tell to the disciples. And you will understand that in John chapter 14, verse 1, 2, and 3. When you read John chapter 14, verse 1, 2, and 3, it is pretty much the same things that he starts off with, right? When we read from John chapter 14, verse 27, it ends by saying, don't let your hearts be troubled and do not be afraid. And that's the same thing. It starts with John chapter 14, verse 1. Don't let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me. Jesus is saying that. Why should I trust in God? Why should I trust also in Jesus? Right? And what is this peace? He says in verse 2, in my Father's house, there are many rooms. If it were not so, I wouldn't have told you that I'm going to prepare a place for you. है ना? मेरे पिता के घर पे बहुत सारे कमरे हैं जहां पे आपको मैं लेके जाना चाहता हूँ. Verse 3 says that, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be there where I am. जहां पे मैं हूं वहां पे तुम भी रहो, इसीलिए मैं वापस आऊंगा. And that's exactly what it says in verse 28. I am going. If you love me, you know, you will be happy. You will be glad. आप खुश हो जाओगे जब आप जानो कि मैं जा रहा हूं. But I am going. You know, I am going to prepare this place for you. You know, the joyous occasion, the peace that should surpass our hearts. आपके और मेरे दिल में जो भरना चाहिए, जो खुशी और आनंद है, वो इस बात का नहीं है कि मेरे घर पे थोड़ा पैसा आ गया, या मेरे घर पे शांति आ गई, या मेरे मन में मुझे बस अच्छा लगा. ये नहीं है. You know, the joy that comes in and fills into a Christian's heart, a child of God's heart, is that knowledge that we have an eternity. हमारे पास एक अनंत जीवन है. जब आपको पता चलेगा, जब हमें पता चलेगा कि ये अनंत जीवन हमारे पास है, वो खुशी कोई नहीं छीन सकता हमसे, कभी नहीं छीन सकता. Nobody can ever snatch away that eternity from us. No one can ever snatch it away. And this is what Jesus was trying to say. I just want to go a little off the topic. Just striking into my mind. The topic of the topic is this. Jesus mentioned in Matthew chapter 10, when you read from, if I'm not wrong, it's verse 35, right? It says that, don't think that I've come to bring peace into this world. I came to bring sword. I believe that's Matthew chapter 10, verse 25.
right? 34. If you can read verse 34. ये ना समझो कि मैं हाँ, पृथ्वी पर मिलाप करने आया हूँ। हाँ, मैं मिलाप कराने नहीं, पर तलवार हाँ, चलवाने आया हूँ। हाँ, है ना? आप उसके नीचे भी पढ़े, आगे भी पढ़े, 35 भी पढ़े। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी हम्म, को उसकी माँ से और बहू हम्म, को उसकी सास से अलग कर दो। हम्म, मनुष्य right. मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। Right, right. So when we see this, we see that Jesus saying that don't think that I've come to bring what do you say, peace, है ना? अंग्रेजी में ऐसे कहा है, आप मैं सोचता हूँ मैं शांति लेगा, ये शांति की बात जो यीशु मसीह ने कहा है ना? I want to try and bring this connection. The peace that Jesus was trying to talk here, it is not about the peace that we probably we might have that in our homes, but not necessarily it is talking about a bhautik taur pe. It is not an exterior peace or a joy that Jesus is trying to talk about, right? When Jesus came to this world and when we accept Jesus, don't think that everybody is going to be at peace, right? When Jesus is talking about this and when what we read in Matthew chapter 10, right? What Jesus is trying to say is basically, है ना, ऐसी बात कह रहे हैं कि अगर आपके मन में, if I choose Jesus in a personal way, when I'm talking this, I know of certain pastors. मैं झूठ नहीं बता रहा हूँ, मैं खुद को जानने वाला व्यक्ति है, वो लड़के का शादी होने वाला है अभी, and I know of pastors who are not happy that their children are into missions, right? When Jesus actually comes into our life, not everybody is happy. सब लोग खुश नहीं होंगे, उसी के बारे में लिखा गया है, सब लोग खुश नहीं होंगे, है ना? अगर आपके घर पे, मुझे पता नहीं आपके घर पे किस पे है, किससे बात कर रहा है ना? आप अगर मसीह यीशु को चुने हो और आपके अंदर शांति और समाधान प्रभु ने अगर भरा है और खुशी आपके अंदर आया है, हो सकता है आपके घर वाले आपके विरोध में खड़े हो गए होंगे और घर के अंदर जो है शांति नष्ट हो गया होगा। यही यीशु मसीह कह रहे हैं, वो इसलिए नष्ट हो रहा है क्योंकि उनके अंदर वो लोग जो आपके विरोध में खड़े हो रहे हैं, उनके अंदर यीशु मसीह नहीं है, उनके अंदर वो यीशु का शांति और खुशी और समाधान नहीं है। That's the reason, and that's exactly what Jesus was trying to say, right? I know of a guy who attended, a young guy, right? He attended one of those youth camps, and in this youth camp he was challenged, and God spoke to him and said, "You need to go in for missions." And he chose to go. He did his MBA. He went into one of those mission hospitals in Assam, and he became a person who's working there. His father, who's a pastor, was not happy about this. उसने उसको घर से बाहर निकाल दिया. Whenever he's right now in Kerala, is what I got to know. वो जब भी केरल में वापस आता है, उसके घर पे अनुमति नहीं है, शादी के लिए कोई अनुमति नहीं दिया गया, माँ बाप आपकी आशीष नहीं कर रहे हैं. क्यों पता है? क्योंकि वो माँ बाप कह रहा है, मैंने तेरे को इतना नहीं पढ़ाया ताकि तू जाके मिशंस करे ना, I did not teach you so much, मैंने तुझे इतना पढ़ाया इसलिए नहीं ताकि तू जा और जहाँ और कहीं जाके पैसा मतलब क्या मिशंस करे ना, मिशन से बहुत कम पैसा मिल रहा है. Sad state. This is exactly what peace will go in that manner. वो पास्टर के घर पे हो, विश्वासी के घर पे हो, इस प्रकार का शांति जाएगा अगर पूरा परिवार एक संग में एक मन में नहीं है. My time is running out, right? That's exactly what Jesus was trying to say there, right? And what Jesus wants to, the peace that God wants to bring is about our understanding on eternity. जब तक हमारे अंदर, if we have the sight on eternity is when we can experience the peace and joy, my dear children of God. अगर हमारा मन और हमारा हृदय अगर ये अनंत जीवन पे लगा रहेगा, तब ही है कि हम जो है ये शांति और खुशी को अनुभव कर सकते हैं. That's when, and that's exactly what the Holy Spirit is wanting to lead us. When we give our control to that Holy Spirit, our Holy Spirit will lead us into that point wherein we will understand this peace and this joy. When it's not just understand, we will experience that peace and that joy, right? This peace and joy is linked there, right? I want to run through. My time is just running away. I didn't know that it will take so much time. I have much more to speak, right? When we come, I'm just going to take some famous verses that we all know. You know, when we come to Philippians chapter 4, right? That's where it's mentioned about joy.
है ना, हर जगह पे हमने जब अभी पढ़ा John chapter 14 verse 27 and 28 talks about joy. It says that you heard me, I am going away and I'm coming back to you. If you loved me, right, you would be glad. अगर आप मेरे से प्रेम कर रहे हो, सच्चा प्रेम कर रहे हो, if you are loving me truly, you will be glad that I'm going, right? You will have the joy because Jesus is going to prepare that place for you and me. आपके और हमारे लिए वो जगह सिद्ध करने के लिए, जहां पे हम जाके उस यीशु के साथ अनंत जीवन जी पाए, वो जगह बनाने के लिए जा रहे हैं. वो हमें खुशी देगा. That will give us joy, right? Great joy. That will give us great joy. And that's exactly what Jesus was trying to say. When we turn to Philippians, even before going to Philippians, I also want to touch upon this just because I came to Matthew chapter 10, right? Matthew chapter 10, when we come there, we are all in this whole phase of pandemic, है ना. कोरोना से लोग डरे हुए हैं. मसीह के लोग क्या हम डरना चाहिए? I would say you should never be afraid, है ना. आपको कभी डरने की जरूरत नहीं है. इसलिए नहीं कि आपको कोरोना नहीं आएगा, कोरोना आ सकता है ना. मैं ये कहने के बाद आप कल से मास्क पहन के मत घूमो. मैं हाल ही में देखा कोई केरल में कुछ लोग जो है पास्टर लोग मास्क पहन के नहीं घूम रहे, बोलेंगे हमें कुछ नहीं आने वाला है. ऐसे मूर्खता कभी नहीं करना. मैं ये नहीं कह रहा हूं. I am saying that you should not be afraid of this. The reason I am saying this is because Jesus has told this. When we read from Matthew chapter 10 verse 28, Jesus told this, that don't be afraid of anything that can kill your body. आपके शरीर, यीशु मसीह ने ये जो कहा है इसलिए कहा है, जब लोग सुसमाचार देने जाएंगे शायद लोग तुम्हें पकड़ के मारेंगे, उसके बारे में कह रहे हैं. But I'm just taking it to the another extent, right? Jesus is saying don't be afraid of those things that can kill your body, may it be a virus. Don't be afraid of that thing that can kill your body, may it be people, RSS हो, BJP हो, जो भी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो. अगर आपको मारना चाहे आप उनसे मत डरो. हो सकता है कि आपके कलीसिया के लोग ही आपको मारेंगे. That's what happened, right? When Jesus came, it was the Jews and the Pharisees who threw stones, who wanted to kill Jesus, right? You know, don't be afraid. Don't be afraid to say truth because of the people or the things that can kill you. Don't be afraid of the things that can kill your body, but be afraid of the one who can kill your body and your soul and your spirit and put you to hell. मतलब ये है कि आप परमेश्वर का भय रखें. If we as the children of God, if we are only scared of God, scared as in I'm not giving this kind of a fear, है ना, अगर हम परमेश्वर का भय, we have the reverence for God and we have the fear of God. You know, we don't have to fear anything that can kill our body. That's exactly what I'm trying to say. And that's why we as Christians should not be afraid of corona. If you are afraid of corona or if you are afraid of any other persons around in the world, the fear would come, sometimes kind of fear. But if that fear is taking a toll on you, if that fear is not allowing you to move freely, if that fear is not is giving you sleepless nights, and let me tell you, then you are somebody who's living for this world. आप इस दुनिया के लिए जी रहे हो, उसीलिए आप इस शरीर के लिए जी रहे हो. हम इस शरीर के लिए नहीं जी रहे हैं, हम जी रहे हैं वो मसीह के लिए. और वो मसीहत में जिस प्रकार से पौलुस कहता है, मैं अगर जीऊं तो ये आपके लिए लाभ है, अगर मैं मरूं ये मेरे लिए लाभ है, क्योंकि मैं उस मसीह के साथ रहूंगा. और मुझे मरना लाभ है और मुझे जीना आपके लिए लाभ है. इसके लिए I am torn apart with these two desires. Should I live or should I die? That's how we should be. We don't care about what our life is, है ना. हमें कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है. किससे डरेंगे? कोरोना से डरेंगे. We got to pray for that. Yes, we definitely pray for God's protection, but we shouldn't be fearing in a form wherein it should give us sleepless nights, right? I'm just touching on this aspect. You know, if we have the true fear of God, right, even if it is death or sickness, we will get there and we are going to come there. Even if it's death or sickness or nakedness or hunger, whatever it is, we don't care. Because we know our eternity is set. अगर हमारा अनंत जीवन सुरक्षित है तो हमें किसी चीज की डरने की जरूरत नहीं है ना. और यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि ये है ना, मसीह में जब हम रहेंगे और ये पवित्र आत्मा का जो है ना, the fruit of the spirit is joy and peace, and no one person can ever snatch this joy and peace away from us. ऐसा दुनिया में कोई माइकल लाल नहीं है जो उसको निकाल के फेंकेगा. There is nobody who can pull it out unless for you yourself.
and me myself decide to do that. Right? Let's turn. My time is running out. Let's turn to Philippians chapter 4. Right? And we are reading from Philippians chapter 4. It's a very famous passage. Right? I would just want to read it out in a running way. आप सब जानते हैं, है ना? Chapter 4 verse 4. It says, "Rejoice in the Lord always." And again I say, rejoice. आप हिंदी में पढ़ सकते हैं कोई? 4 verse 4. प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हाँ, 2 बार कह रहा है। कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है कि प्रभु में तुम आनंदित रहो। मैं दोबारा कहता हूँ, मैं फिर कहता हूँ कि तुम आनंदित रहो। Right? You know, when Paul is talking about this joy, ये कहाँ से लिख रहे हैं आपको पता है? You need to read this whole of this Philippian, the epistle, the letter to the Philippian church. है ना? जब हम फिलिपियों की पत्रिका हम जब पढ़ेंगे, है ना? पौलुस जहाँ से लिख रहा है, वो जो है, he is in jail, है ना? वो जो है जेल को क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, है ना? He is writing it from the jail. He is writing it from the prison, and it is not a normal prison, right? He is in a Roman prison, and he is in struggle. When we read through that book, you find वहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में देख सकते हैं, Epaphroditus, है ना? Epaphroditus was a man that was sent from the Philippian church to take care of Paul in the prison. Paulus जो वो कारागृह में था, वहाँ पे जो है उसको बीमारी था. There was sickness on Paul, and here is one person who was sent from the Philippian church to the Roman prison to take care of Paul, right? And Paul, when that person reached that, he became sick. Epaphroditus बीमार पड़ गया, और पौलुस को इतना दुख हो रहा है ना? और वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु इसको बचा दो, है ना? इसको बचा दो. He was praying literally to the Lord to have mercy upon himself. Basically, he's saying, he's writing that, है ना? प्रभु ने मुझ पे दया दिखाया क्योंकि मेरे ऊपर दुख के ऊपर दुख ना आए, इसके लिए एपाफ्रोडिटस की जान को बचा दिया प्रभु ने, है ना? And when Paul is writing that, what Paul is writing from deep pain. हम जो जेल सोचते हैं, ऐसे नहीं है. आज के जेल भी उतना खास नहीं है हमारे देश में, लेकिन इसका 10 गुना बदतर जेल है. वहां पे पता नहीं क्या चल रहा था, लेकिन वहां पे in that position, when Paul is writing, he is writing from prison and saying, rejoice in the Lord. And I say again, rejoice. Paul, when he is writing that, he is writing with so much joy. You read that letter. He is writing with full of joy for the church in Philippians, right? And he's writing in chapter 2, right? Paul repeatedly gives this statement. He says that, make my joy complete. You read that in Philippians chapter 2, right? You read that in 2 Corinthians chapter 2. You read that in 1 Thessalonians chapter 2. Paul repeatedly tells the church that make my joy complete. मेरे खुशी को आप पूरा करो. कैसे पूरा करेंगे, है ना? कैसे पूरा करेंगे? When he says that by being like-minded, एक मन के रहो, है ना? He says that by following the true faith, right? मतलब ये कहना चाहता है कि तुम जो है मसीह पे जो विश्वास है उसको पूरी तरह से पकड़ लो. अगर तुम ऐसे पकड़ पाओगे तो मेरा खुशी पूरा होगा. This is the true joy of a pastor. This is the true joy of an apostle or an evangelist. When he sees that the church that he planted, and then जब वो देखता है कि जिस कलीसिया को उसने लगाया, and that is standing firm in the Lord, not in the world. दुनिया में नहीं. बिजनेस बढ़ गया, इसमें नहीं, खुशी नहीं है ना? बहुत अमीर हो गए हमारे चर्च के विश्वासी, इससे खुशी नहीं है. जब विश्वासी सारे जो है मसीह में खड़े हैं, ये 40 दिन का उपवास जो चल रहा है, इसीलिए चल रहा है कि हम सब मसीह में खड़े रहे, है ना? We stand true in the Lord. And हमें मसीह में खड़े होकर क्या देखना है? मसीह में आके क्या फायदा है? वही दिखा रहा था यीशु मसीह, है ना? यूहन्ना उसका 14 का पहला आयत, दूसरा और तीसरा आयत में हम देख रहे हैं, है ना, कि हमें वो अनंत जीवन दिया गया है ना? मैंने कहा पहले, है ना, हम लोग जानवरों से अलग है. We are different from that of any animals or birds or any other creation, है ना? हमारे मरने के बाद कुछ नहीं है, दफना के डाल दे, खत्म कहानी नहीं है, है ना? हम लोग अलग इसलिए हैं क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है. There is spirit. I don't want to explain that again, right? There is spirit within us, and that is the spirit that Jesus is talking about. And we as people, we will rise again. एक और बार हम जी उठेंगे और उस मसीह के साथ रहेंगे, और उस दिन जब रहेंगे अनंत जीवन रहेगा हमारे पास.
या फिर अनंत जीवन रहेगा, नहीं तो अनंत मौत रहेगा। इस अनंत मौत से बचने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया में आया और उस प्रेम को दिखाया ताकि हमें वो अनंत जीवन मिले, राइट? That's the eternal life that Jesus wants to give us. God wants to give us, and that's exactly what Paul is trying to speak here about the eternal life. He says that rejoice in the Lord. है ना? कलीसिया अमीर कलीसिया नहीं है, गरीब है कलीसिया, है ना? कलीसिया में परेशानी चल रहा है ना? There are persecutions also that the church has faced through. And Paul is mentioning that in chapter 1 towards the end. He is talking that, है ना? आपके पास परेशानी रहेगी, कोई बात नहीं, है ना? खुश रहो आप, खुश रहो. And he's saying in chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord. Again I say rejoice, right? And I like when that the same way I'm talking about joy and peace together, है ना? Now this is not circumstantial, है ना? ये मेरे मन लगा नहीं तो यार मेरे को कुछ अच्छा मिल गया तो मैं खुश हो गया, मेरे से अंदर से कुछ निकल गया तो मुझे दुख हो गया, है ना? जब सब कुछ मेरे पास है मुझे शांति है, जब कुछ नहीं है मेरे शांति चले गया. सर्कमस्टांस के हिसाब से बदलने वाली शांति और खुशी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. ये आनंद जो है भरपूरी है, this is going to stay with us, right? And that's the joy and the peace that the Holy Spirit brings into our lives. When we see here, when we go further down in Philippians chapter 4, when we go further down, when we read from verse 6 and 7, right? When we read from 6 and 7, कोई पढ़ सकते हैं 6 और 7 पढ़े. किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए. तब किसी भी चीज की चिंता मत करो, है ना? Don't worry about anything. You know, worry is the opposite of peace, है ना? दुनिया के तरीके से देखोगे शांति का ऑपोजिट युद्ध है. The opposite of peace is war. But when it comes to our own personal self, everybody's personal self, the opposite of peace is worry, right? Anxiety, worry. Worry is the opposite of peace. And you see here that Paul is saying, don't worry about anything. किसी भी चीज की चिंता मत करो. अगर आपके अंदर चिंता आ रही है, you know, I told yesterday about the first step. कोई याद कर रहा है? Do you remember what is the first step to love? Does anybody remember? Right? I just want to mention. Okay, first step to love. Yesterday I told first step to love is compassion, to have love, and first step to lose love is to have ego, right? And the same way, the first step to have peace is to have prayer, right? जब हम प्रार्थना करेंगे तभी हमारे पास शांति आएगा, है ना? जब भी हमारे शांति चले जाते हैं. I am talking this out of experience, and I'm experiencing all of these things that I'm preaching to you right today, right? When I'm talking about peace, जब भी कोई भी वस्तु आपको चिंता में डाल रही है, you take it to the Lord in prayer, and जब आप प्रार्थना करोगे आपको उस चीज पे उत्तर नहीं मिलेगा. When you take it to the Lord in prayer, you might not get an answer for that prayer, for the request that you're putting across. But you know, I will guarantee you one thing that you will get. You will get the peace of God that surpasses all understanding, which will guard your hearts and minds in Christ Jesus. आपके अंदर वो शांति जरूर आएगा जो हमारे सारे मन को जाने. कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इसको समझ पाएगा. सारी समझ के परे वो शांति हमारे मनों को, हमारे हृदयों को मसीह यीशु में जो है एकत्रित करेगा. This is what we receive when we pray. When you lose peace, God is going to give us peace. Probably our prayers might be answered, probably our prayers might not be answered. But one thing would come, that is peace. And along with the peace, joy comes in, right? Shanti aur samadhan hamare andar aayega, right? When we talk about joy, right? When we go a little further down, right? Paul is saying, rejoice, rejoice. है ना? ऐसे कोई समय ना हो जब आपके पास खुशी नहीं हो, है ना? And when we read from verse 11 onwards, है ना, chapter 4 verse 11 onwards, that Paul is saying, you know, Paul is saying about gifting. हम लोग उसको मतलब खर्च के लिए देने के बारे में कर रहे थे, कह रहा था कि वो धन्यवाद कह रहा है. He was thanking for the gift that they sent, and he's telling in verse 11, and I'm not saying this because I am in need. मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे को कोई जरूरत है. For I have learned to be content with whatever circumstances. Content, संतुष्टि के बारे में कहा गया है ना? मैं संतुष्ट हूं
मैं सीख लिया हूं संतुष्ट होने के लिए. I've learned to be content. You know, the first thing to have peace is to have prayer, and the first thing to have joy is to have contentment. And these are my rules. Don't tell that I'm like, when I was preparing, I just got all these things and I just wrote it down. Okay, don't tell if somebody else is giving some other rules, I'm wrong, right? What I'm trying to say, the first step to have joy is to have contentment. संतुष्टि है पहला स्टेप हमें खुशी मिलने के लिए. जब संतुष्टि चले जाएगा, कभी भी आप खुशी अनुभव नहीं कर पाओगे. If you are not content, you will not be able to enjoy joy. You will never have joy. Let me tell you, very straightforward. I'm giving a blanket statement. If you are not content, आपको यहाँ पे पौलुस क्या कहता है आगे पढ़ते समय, है ना? I am not able to share my screen, but it's okay. I'll just mention it out, right? What Paul is trying to say there is basically when we read from verse 12, he says that I know what it is to be in need and I know what it is to have plenty. मैं जरूरतमंद होते हुए कैसा रहना मैं जानता हूँ. I know how to be in need and I know how to have plenty, right? मेरे पास सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. है ना? मैं भूखा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं पेट भर के सो रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं संतुष्ट हूँ, right? I have learned to be content. है ना? मेरे घर पे खाना है, खाना नहीं है. मेरे घर पे मैं साइकिल चला रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं मारुति 800 में भी जा रहा हूँ, मैं संतुष्ट हूँ. मैं मर्सिडीज बेंज में भी जा रहा हूँ, मैं संतुष्ट हूँ. मैं संतुष्ट हूँ. And he adds there in verse 13, he says that I can do all these things through Christ who gives me strength. है ना? मैं संतुष्ट रहना सीख गया हूँ. कैसे? मसीह यीशु के द्वारा. कुछ लोग ये सब वर्ड को ट्विस्ट करते हैं ना. मैं एक कॉमेडी वाला एक पिक्चर मैंने देखा था, मैं वही डालना चाहता था, है ना? In which wherein there is a man who's trying to open a pickle jar. है ना? वो पिकल का एक ढक्कन खोलने की कोशिश कर रहा है, खुल नहीं रहा है, बहुत टाइट है. And he's trying to open and he says I can do all things through Christ who gives me strength. मुझे शक्ति देने वाले मसीह यीशु में सब कुछ कर सकता हूँ. है ना? उसकी बीवी वहां से चल के आती है और बोलती है, भाई साहब तुम पिकल का, you open the pickle jar, twist the pickle jar, twist the lid, don't twist the scripture. है ना? आप पिकल जार को खोलने की कोशिश करो, है ना? स्क्रिप्चर को मोड़ो मत. है ना? कभी-कभी हम गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं. मैं वहां पे नहीं आ रहा हूँ, है ना? लेकिन यहाँ पे पौलुस कहता है कि I am content. Nobody can take this contentment away from me, right? Contentment is the first step to have joy. Amen. Right? Contentment is the first step to have joy. Prayer is the first step to have peace. Right? You know, my time is up. I want to run through a few things that I want to mention today. No, when it's talking about joy and peace here, है ना? खुशी और शांति के बारे में जब मसीह यीशु के बारे में यहाँ पे कह रहे हैं, है ना? पौलुस भी यही कहता है, पत्रस भी यही कहता है ना? आप जरूर ढूंढे, है ना? आप in fact First Peter chapter 1 verse 8 it talks about peace and joy, and it is there are a lot of these scripture passages that we can read through, right? In First John we can read through, you know, in all these passages, one thing that the scripture writers are trying to say, what Jesus want to say is that, you know, when we have our eyes fixed on eternity, अगर वो अनंत जीवन में हमारा आंख जो है फिक्स किया गया है, तो हमारे अंदर से ये शांति और समाधान कोई निकाल के नहीं फेंक सकता, है ना? There will be struggles that we will go through, right? There will definitely be struggles that we will go through, right? When we read from James chapter 1 verse 2, James, the brother of Jesus, he's saying, you know, my dear children, consider it as a great joy when you have troubles. When you have troubles, आपके पास जब परेशानी आएंगे, आप इसको बड़ी संतोष की बात, खुशी की बात इसको मान लो, क्योंकि इसके द्वारा you will get to a point wherein you will not need anything, right? हमारे अंदर संतुष्टि आएगा. ये संतुष्टि और खुशी कहाँ से आ सकती है पता है? केवल उस पवित्र आत्मा के फल के द्वारा आ सकता है. This shanti, this peace and joy can come only through that Holy Spirit. This is exactly what the disciples of Jesus had. Initially they did not have. जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे और यीशु मसीह उनको चला रहे थे, उनको कभी ये कुछ समझ में नहीं आया था. हमेशा वो लड़ाई करते थे, कौन बड़ा है? Who is the greatest? They used to have this fight. And here is the point wherein they understood who this Jesus, when the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit came and filled in them, right? When they received the
power of the Holy Spirit. The Holy Spirit came into this world at that time. At that very point, they started to understand what is contentment. They understood what is peace. मौत के घात उठा रहे थे. They were being in trial. They were being into sin. None of these disciples died a normal death. कोई भी है ना ऐसे नहीं मरा, सबको मार दिया गया था, including John. He was not sent to Patmos for honeymoon, right? He was sent to Patmos to be killed. है ना? He was sent to Patmos to be killed. Everybody went through persecution. Everybody went through death. They were killed. है ना? इनको जब मार दिया गया था, है ना? They did not lose their peace or joy. That's why I said it's not circumstantial. They did not lose their peace or joy. What does Paul say? He is trying to tell that this joy and this peace is not circumstantial. The peace that you will receive, it will surpass all understanding. It will surpass all understanding, which will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. And this is the joy and the peace that God has called us to experience. इसे हमें अनुभव करना है. हर दिन, प्रतिदिन हमें इसे अनुभव करना है. Paulus ऐसे ही नहीं कह रहा है. He experienced it and he's saying that. When we come to Romans chapter 8 and when we read from verse 35 onwards, he asks this question: who is the one who can take us away from the love of Christ Jesus? Right? What can take us away from the love of God? He asked this question. And हम ये जानते हैं. And he asked this question: who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, shall hardship, shall persecution, famine, nakedness, danger or sword? क्या निकालेगा? हिंदी में पढ़ सकते हैं क्या? 8:35, Romans 8:35. और कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, जैसा लिखा है, तेरे लिए हम. We don't have time to read furthermore, but वहां पे साफ तरीके से लिखा गया है, ऐसा क्या है जो हमें मसीह का प्रेम से दूर कर सकते हैं? ऐसा क्या है जो मेरे अंदर वाले खुशी को दूर कर सकता है? ऐसा क्या है मेरे अंदर जो समाधान है उसको उखाड़ के फेंक सकता है? ऐसा कुछ नहीं है. Can it be hardships? Can it be persecution? Can it be famine? Can it be nakedness? Can it be danger or sword? Nothing. ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे अंदर से ये खुशी और आनंद, जो प्रेम है मसीह के अंदर, हमसे दूर कर सकता है. कुछ नहीं कर सकता है ना? ये अगर हमें मसीह से मिला है तो कुछ नहीं निकाल सकता. Amen. If we have got it from God, if our peace and joy is, there is so many of these false teachers and false prophets who are coming and giving us this false kind of security. आज के जमाने में ऐसे समय पे हम रुके हुए हैं जहां पे ये झूठी प्रवक्ता है ना, आके हमें झूठी तरीके के जो है एक आशा देके जा रहे हैं कि तुम मसीह में आ जाओ, तुम्हें कोई क्लेश नहीं आएगा, तुम मसीह में आ जाओ, तुम्हें कोई उपद्रव नहीं रहेगा, तुम मसीह में आ जाओ, तुम्हारे सारे कर्ज निकल जाएंगे, भाई तुम मसीह में आ जाओ, तुम्हें कोई रोग नहीं रहेगा, तुम मरोगे नहीं. There is a new teaching that is coming unless you decide. These are people who have graduated from SABC, and I'm sadly saying, right? SABC is not wrong. The Bible college is not wrong. People have taken wrong understandings, right? People are coming to a point, unless you decide that you would die. जब तक तुम निर्णय नहीं लोगे तुम मरना चाहते हो, तब तक तुम नहीं कर पाओगे, अमर रहोगे. चलने वाले लोग भी हैं, right? This is not gospel. What is gospel? There are struggles that will come through, but in the midst of that, no one can snatch us away that love and the joy and the peace that we have in Christ Jesus. When you read further down, verse 37, no, in all these things we are more than conquerors. हमने जीत लिया है. कैसे जीता है? पवित्र आत्मा के द्वारा हमने जीत लिया है. Greater is he who is in us than he that is in the world. इस दुनिया में जो हमें डरा सकता है, जो हमें हमारी खुशी को निकाल सकता है, हमारे शांति को छीन सकता है, उससे बड़ा है जो हमारे अंदर है. 1 John chapter 1 verse 7 is what I'm saying. Greater is he who is in us than he that is in the world. No one can take it away, my dear brother and sister. कोई नहीं निकाल सकता.
इस पवित्र आत्मा के द्वारा जो फल आ रहा है, जो शांति और समाधान है और वो प्रेम है, ये कोई नहीं निकाल सकता. Nobody can snatch it away, right? No one can snatch it away. But to have that, can we turn back? Can we all turn our Bibles back to Galatians chapter 5? है ना, हम अपने बाइबलों को गलाती उसका 5 अध्याय खोलेंगे, है ना, and let's read verse 16. है ना, मैंने first day इसीलिए I touched on that. If we read chapter 5 verse 16 very closely, can we read that? It says, so I say that let the Holy Spirit guide you. हिंदी में पढ़ सकते हो उसको? पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर के अनुसार चलो. May it be the Spirit that guides your life. है ना, अगर हमें इसको अनुभव करना है तो हमें ये जो कंट्रोल जो है उस पवित्र आत्मा के हाथ में देना चाहिए, है ना. जब हम पवित्र आत्मा के हाथ में दे देंगे, पवित्र आत्मा कंट्रोल करेगा और उस समय पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारे खुशी और शांति और प्रेम को हमसे दूर कर पाएगा. ऐसा कोई नहीं है. Because it is the Holy Spirit. We have got this joy of the Spirit within us. My time is up. Right? I wanna end with this analogy of giving your control to the God. है ना, पवित्र आत्मा के हाथ में आप अपना पूरा कंट्रोल दीजिएगा, जरूर दीजिएगा. है ना, I want to end it with this story, right? Wherein one man, he was praying. He was a businessman. है ना, एक बिजनेसमैन था. वो प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर आप मेरे जिंदगी में पूरा कंट्रोल ले. And he's a very good man. He was praying and he gave his complete control to the Lord, and the Lord was controlling him. But he was a businessman, and there came a point wherein he was praying this prayer again, and as he was leading through, the Lord spoke to him and said, can you give your business into my hands? And he was thinking, Lord, kya matlab kya? He's like, you need to give the control. If you are telling that I am the one who's supposed to control you, I am the owner of everything, the lordship. है ना, अगर हम मसीह को परमेश्वर या खुदा मानेंगे या राजा मानेंगे तो वो हम उसके दास हैं. हमारी सब कुछ उसके हाथ में देना चाहिए. है ना, तो ये परमेश्वर से बात करता है, you have to give your business into my hands. And he was going back to his home and he said, Lord, I am giving my business into your hands. मैं आपको दे रहा हूँ. है ना, I want to be tension free. इसके अपने बिजनेस में बहुत टेंशन था. है ना, he is like, I am giving it to your hands. तुम चलाओ, जो करना है करो. है ना, and you know what happens the next day morning when he comes, है ना, जब आ रहा है उसको एक कॉल आया कि तुम्हारा जो है कंपनी जल रहा है, there is fire in your company. And he comes to the, है ना, वो आराम से आता है और आके अपना गाड़ी रोकता है और देखता है लोग पानी मार रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं, employees are throwing water on the factory, है ना, सब कुछ कर रहे हैं. है ना, ये वहां खड़ा है देख रहा है ना, और एक बंदा दौड़ के, यार तुम्हारा कंपनी जल रहा है, क्या तुम्हें कोई डर नहीं लग रहा, तुम्हें टेंशन नहीं हो रहा है? उसने वाला मुझे टेंशन नहीं है. उसने क्या हुआ? मैंने कल रात को मेरा कंपनी बेच दिया. है ना, he told that I sold my company last night. Right? If we can sell out everything that we have to God, we will not be afraid even if it burns down. है ना, प्रभु के जाने बगैर हमारी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है. बाकी लोगों की तरह नहीं है हमारी जिंदगी. हमारी जिंदगी जो है मसीहत में है. And when we read from Matthew chapter 6 verse 31, if I'm not wrong, right, Jesus is saying, do not worry. He said, don't worry like pagans. He says that जाति लोग, अन्य जाति के लोगों को जो है चिंता करने की जरूरत है. कारण इसलिए चिंता कर रहे हैं क्योंकि उनके पास मसीह नहीं है. वो खुदा नहीं है जिसने पूरे दुनिया को रचा. हमारे पास वो खुदा है और उसके जाने बगैर कुछ नहीं हो रहा है हमारी जिंदगी में. Right? And this joy and peace that God has given to our life, it is not circumstantial. है ना, ये एक संदर्भ के हिसाब से बदलने वाली नहीं है. हर संदर्भ में ये खुशी और शांति रहेगी. जब हमारे अंदर से शांति निकल जाएंगे, एक काम करो, भागो परमेश्वर की सन्निधान में, आप प्रार्थना करो. आपको उत्तर मिले या ना मिले, एक चीज जरूर मिलेगा, वो है शांति. शांति के साथ जो आता है वो है खुशी. And that's how Paul would say, rejoice in the Lord. Again I say rejoice. Even it is a point of death. Even it's the point, all the disciples of Jesus when they were being killed, even Peter to the point when he was about to die, he did not cry out and say, Lord, bacha do. ऐसा कुछ नहीं किया. He said, I would want to be dying upside down. मैं उल्टा मरना चाहता हूँ क्रूस पे. मैं अपने मेरे स्वामी यीशु के
मेरे उसके पैरों को चुम्बन देते हुए मैं मरना चाहता हूं. I want to kiss the feet of Jesus and die upside down on the cross. That's what brings about the joy that's eternal and the peace that is eternal. This nobody can snatch away from us, and that comes from the Holy Spirit, and this is the fruit of the Spirit, right? My prayer is this, that may God lead you all. परमेश्वर आप सब को चलाए, हमें चलाए, मुझे चलाए, ताकि हम जो है इस पवित्र आत्मा की इस ध्वनि को सुन पाए, जो वाणी को सुन पाए, जो हमें चलाना चाहता है. मैंने कहा था ना शुरुआत में, उस ध्वनि को हम सुनने पाए जो हमें चलाना चाहता है. That has to lead us, and may God lead us in that point. Thank God for this wonderful time. प्रभु आपका आशीष करे.